आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादई चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या कार्यावळींत युरो स्टॅम्प इंडिया ह्या येवजणेचो शुभारंभ आनी फातोड्ड्यां येरादारी फाट्याचें उक्तावण. युरो स्टॅम्प इंडिया ह्या येवजणेंतल्यान बरेच जाणांनी गोंयांत गुंतवणूक करपाची तयारी दाखयल्या म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायल्या. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण तांच्या हस्तुकीं जालें. हे आसात डॉ प्रमोद सावंत. It is a matter of great pride and privilege to join all of you for today's grand inauguration of Eurostampa, first manufacturing plant in Asia, right here in the beautiful state of Goa. I extend my warmest congratulations to the entire Eurostampa team on this landmark occasion. Your decision to choose the Goa over the several other regions across India and Asia, it is a strong endorsement to our state's growing reputation as a preferred investment destination. This is not just an achievement for the Varna Industrial Estate, but a significant milestone for the people of Goa. This facility stands as a symbol of success of Make in India, the initiatives of very own Make in Goa mission. It is directly contributes to the vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who has always believed in India's potential to become the global manufacturing hub. By setting up this factory in Goa, the Eurostampa has added the new strength to our industrial fabric, making the more diverse, resilient and future-ready. It is add to the depth of quality of Goa's manufacturing sector, which is until recently was dominated by few core industries. Such projects are helping us to build economy that diverse, job generation and global connectivity. And what makes this even more noteworthy to the speed of execution. From the plot allotment to the completion of the construction in just 18 months, it speaks the volume about the Goa's improved ease of doing a business environment. This indicates that the major initiatives by the government of GIDC to the streamline the plot allotment and licensing system is truly effective. I am congratulating my MD Abhishek and entire team for this purpose. It is within short span of time this you people have did it. This factory is one of the first of its completed in the phase 4 of the Varna Industrial Estate. During my visit today, I have noticed the large number of the project under active construction. This is the signals to the renewed wave of industrial expansion and economic development in our state. I was also pleased to learn that Eurostampa has entered into the partnership with the Don Bosco College of the Engineering to train and recruit the local student, not just for the Goa, but for the Italy and North America as well. I congratulate Eurostampa for his leadership for the forward-thinking approach. And I encouraged for the other multinational companies for operating in Goa to explore the similar partnership with our academic institutions. Such industry academia collaboration is truly reflect the spirit of the Swayambhurna Goa, where the self-reliant is built through the education, opportunity and entrepreneurs. This is the future of we are committed to when well developed touches the every home and every family. To the many industry leaders who are present here today, from the beverage, cosmetic and package sectors, I say with confidence, Goa is ready to welcome you. We offer the combination of the skilled labor, the modern infrastructure and policy support that is matched. My government stands committed to being partner with your growth. Today's inauguration is not just about the company's opening its door, but it's about the large door is opening for Goa
the door of the quality employment, the world-class skill development, and globally connected future. When global brand that supplies the some of the world's most premium labor choose the Goa, it elevates not just the economy, but it elevates the Goa's brand. That reputation brings the new investors, new sectors, and more confident to our development story. The world is now coming to Goa. That's to me the real success of today's event. That is the future we are building together. Once again, I'm congratulating to you people for coming and establishing your shop in the state of this beautiful state of Goa. Congratulations to one and all. Thank you. हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियां भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली, तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला, तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है और यही तो है विकसित भारत का अमृत काल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। पहले युवा नौकरी की खोज में रहते थे, अब स्टार्टअप्स की मदद से नौकरियां भी हैं और बड़े सपने देखने का जरिया भी। पहले सीखने की चाह तो थी, पर आर्थिक परिस्थिति हमें सीमित कर देती थी। अब नए नए हुनर सीख भी रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ भी रहे हैं। परिश्रम चाहे जितना कर लो, दशकों तक मेडिकल कॉलेज की सीटों में नाम मात्र की बढ़ोतरी थी। अब कॉलेज में सीट भी मिलती है और डॉक्टर की उपाधि मिलने पर गर्व भी होता है। पहले अपना व्यवसाय करने का सपना देखना भी असंभव लगता था। आज वो स्टार्टअप का सपना साकार हो चुका है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। फाटल्या सप्तकांत फातोड्ड्या येरादारी फाट्याचें उक्तावण जालें। मडगांव आनी फातोड्डा भागांत
येरादारीची कोयणी जाता ती सोडोवपाक हो येरादारी फांटो नेटान कामाक लागतलो अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली. हे आसात डॉ प्रमोद सावंत. मेळटलो. सगळ्यात पयलीं हांव फातोर्डाकारांक ट्राफीक सेल तुमच्या खातीर इनॉग्रेट केला तेजी खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी हे सांगता आसतनाच गोंय जें आसा पळय न्ही हें डे बाय डे एक जर रेशो पळयत तुमी पीपल टू व्हेकल रेशो जो आहा पळय न्ही हो देशांत हायेस्ट आहा. म्हणजे पर पर्सन व्हेकल जर धरल्यो म्हणजे एकट्याच्या फाटल्यान 2 आनी 3 गाडयो आसता. आनी तें एक कारण आसा की आमी मॅक्झिमम एक्सिडंट कित्याक जाता. दुसरी गजाल गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत ट्युरिस्टूय येता आनी मायग्रंटूय येता. आनी हे सगळे लोक थोडे जाण ती रेंट अ कार रेंट अ बायक घेवन भोंवता आनी थोडे जाण जे आहा ते आपल्यो गाडयो वेगवेगळ्यो घेवन भोंवता. ट्राफीक रूल फॉलो करिना. बऱ्याच जाणांक रोड खबर ना आनी खूब जाणांची मदीं कंप्लेन आयली की तुमचे सगळे पुलीस तालाव दिता म्हणपाले. हांव म्हणलें आमचे सगळे पुलीस तालाव दिना. हेल्थ फक्त PSI आनी PI हेच बीच बॉडी कॅमेरा दिता. तर ती पुलिसांकूय दोश दिवपाचो सोडात म्हटलें. म्हणल्यार आमकां एक खंत जी आहा पळय न्ही आत्तां विजयान व्यक्त केली पेडेस्ट्रियन डेथ. लोक रस्त्यार उबो आसलेलो रस्त्यार चलता तो रस्तो क्रॉस करता तो हे मरप इट इज व्हेरी डेंजर. आनी जर आमी वर्साचे सगळे एक्सिडंट एक एवरेज काडून पळयले जाल्यार मोर दॅन 365 डेथ मिनिमम दर वर्साक जाता. 365 आनी 365च्या भितरले 150 लोक जे आहा पळय न्ही ते तेणें जो आतां रेशो सांगला इट इज ट्रू म्हणजे 27% स म्हयन्याचे. तो तसोच 50% लोक हे गाडी चलयना बेश्टो रस्त्यार उबो आसलेलो दुकानार कितें तरी घेवन रावला तेजेर हल्ली गाडी मारली. तो रस्त्यार चलतालो तेजेर हल्ली गाडी मारली. हे लोक डेथ जाता. आतां ते जर कमी जातले आसत जाल्यार ट्राफीक रूल फॉलो करप आनी ट्राफीक पुलिसांनी ताका कंट्रोल करप हें गरजेचें आसा. म्हणून आमी हे 17वें ट्राफीक पोलीस स्टेशन आमी आज इनॉग्रेट केलां. म्हाका खात्री आसा गोंयांत आमी एडवान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता. विजयान सांगला त्या प्रमाणे अंडरग्रावंड केबल नेटवर्क आसतलें, सिवरेज नेटवर्क आसतलें, पायपलायन्स आसतले, इलेक्ट्रिसिटी केबल आसतलें. पण ह्या सगळ्याच्या बरोबर म्हणजे ट्राफीक सेल आसप हो तितकोच गरजेचो आसा. लोकांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे जेणे करून एक्सिडंट गोंयांतले कमी जावचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. इवन दो इन्क्लुडींग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुदारपा खातीर घेतला. तेजो जर आमकां सगळ्या जाणांनी सपोर्ट केलो जाल्यार रस्त्या वयल्यो व्हेकल कमी जावपाक शकतल्यो आनी रस्त्या वयल्यो कमी व्हेकल जावच्यो म्हणूनच पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुदारतले. हांव परत एकदां म्हणजे ट्राफीक सेल विजयान म्हटलां त्या बरोबर आहा. थोड्या जाणांनी सोबते काडून उडय म्हणपालें. थोडे जाण म्हणलें अर्दे काड आपले. थोडे जाण बेश्टे नांवांक दवर. बट वेलकम करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. शेवटी जो पर्यंत इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी रूल फॉलो करता पळय न्ही किंवा रूल आमीच लॉ करपी आनी लॉ एनफोर्स करपाक सुद्दां आमीच लावपाक जाय तितकें गरजेचें आसा. तें वेलकम करप गरजेचें आसा. म्हणून हांव विजय सरदेसायाचें अभिनंदन करता की तेणें आनी जाता तितकें बेगीन एक्सपडायट करून म्हजे SP ट्राफीक आनी बाकी सगळ्यांनी तें आयज सुरू केलें. सो आयच्यान म्हाका दिसता पयलीं सगळें इटकम सेंटर मडगांव ट्राफीक सेल तेजेर लोडूय खूब आसतालो. पण आतां फातोर्डा अर्बनायझेशन जायत आसा. सो आनी नियर बाय एरियाज ह्या ट्राफीक सेलाचेर येतल्यो. सो इन फ्युचर आमी टॅक्नोलॉजीचो यूज करून हाजेर कंट्रोल दवरपाक सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव परत एकदां म्हणजे समेस्त सगळ्या आयच्या लोकांक हांगा जमल्या त्या बद्दल तांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. हे आशिल्लें आयचें प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमचे मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जाण. आतां परत मेळुया फुडल्या सोमारा. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.